परमशिवोऽहम् ॐ नित्यानन्द 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 परमशिवोऽहम् नित्यानन्द परमशिवोऽहम् ॐ 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 नित्यानन्द परमशिवोऽहम् नित्यानन्द परमशिवोऽहम् ॐ 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 नित्यानन्द परमशिवोऽहम् नित्यानन्द परमशिवोऽहम् ॐ 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 नित्यानन्द
Nityanandam. Before we begin the Pada Puja and Paramashiva Puja today, we request all the Pada Puja participants and everybody else who is participating in this puja physically here and online to declare the following with integrity and authenticity. If you agree to this, please say yes loudly. I authentically cognize, which is internally processed, understand, and declare the truth that cosmic energy exists. Yes. I authentically cognize, which is internally processed, understand, and declare the truth that His Divine Holiness, Swamiji, Nityanandeshwara Paramashiva, and Nityanandeshwari Parashakti, Guru Paduka, and Atmalinga are the Chinmaya Vigrahas, embodiment and representation of that very cosmic energy. Yes. I authentically cognize, which is internally processed, understand, and declare the truth that whatever I offer during the Pada Puja to His Divine Holiness, Swamiji, and Paramashiva Puja to Nityanandeshwara Paramashiva and Nityanandeshwari Parashakti will reach the cosmic source of energy directly. Yes, I authentically cognize, which is internally processed, understand, and declare the truth of Soham Asmi, that even when I worship, I am Him. Yes. Let us now enter the Pratyakshapada Puja, followed by the Paramashiva Puja. Now please be seated in a meditative space of gratitude and deep blissful awareness in your Ananda Gandha. The first is the Satguru Vandanam. Now please take some flowers in your hands and close your eyes and offer the flowers at His Divine Holiness Swamiji feet at the end of the mantra. नित्यानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्याधिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं Satgurum Tam Namami. The next is the Guru Parampara Vandanam. Now please take some flowers in your hands and offer the flowers at His Divine Holiness Swamiji's feet at the end of the mantra. नित्यानन्देश्वर परमशिवसमारम्भां नित्यानन्देश्वरि पराशक्तिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्. The next is the Arunagiri Yogeshwara Vandanam. Now please take some flowers in your hands and close your eyes and offer the flowers at His Divine Holiness Swamiji's feet at the end of the mantra. ललाटेति पुण्ड्री निटिलकृतकस्तूरी तिलकः स्फुरन् The next is the Tattva Chamanam, the ritualistic cleansing of the mouth. Keeping your right hand, pour one uddani of water from the Panchapatram. While chanting each of the following mantras internally, drink the water that flows to the base of the palm. Om Atmatattvam Shodhayami Swadha. Om Vidyatattvam Shodhayami Swadha. Om Shivatattvam Shodhayami Swadha. Chanting the following mantra internally, wipe the upper and lower lips twice using the base of the right hand thumb, moving the hand from right to left of the lips. Om Ham Hridayaya Namaha. Now wash your right hand with the water in the Panchapatram. With the tips of the right hand index, middle and ring fingers touch above the upper lips and below the lower lips. With the tips of the right hand index finger and thumb joined together, touch the right nostril, left nostril. With the tips of the right hand ring finger and thumb joined together, touch the right eye, right ear, and left ear. Wash your right hand with the water in the Panchapatram. With the base of the right hand thumb and little finger, touch the navel, right chest, left chest. With the right hand fingertips together, touch the top of the head, right shoulder, left shoulder, the heart center. The next is the Shuklam Bardram. Please take the Akshata in your right hand, clench your hands, and tap the sides of your forehead 5 times. शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये. Continue to keep the akshata in your right hand. Now open only the little finger, ring finger, and thumb. During the pranayama, use the thumb to close the right nostril and the ring and little finger to close the left nostril. Closing the right nostril, inhale slowly to the left nostril. Once you've inhaled fully, close both the nostrils and hold the breath inside as long as possible. Exhale through the right nostril alone very slowly.
During this inhalation, retention, and exhalation, chant the following mantras 3 times internally. ओम होम ईशानमूर्धाय नमः ओम ह्रीं तत्पुरुषवक्त्राय नमः ओम होम अघोरहृदयाय नमः ओम ह्रीं वामदेवगुह्याय नमः ओम हम सत्योजातमूर्तये नमः ओम हम हृदयाय नमः ओम ह्रीं शिरसे नमः ओम हम शिखायै नमः ओम ह्रीं कवचाय नमः ओम हम नेत्रेभ्यो नमः ओम हस्ताय नमः ओम होम ईशानमूर्धाय नमः ओम ह्रीं तत्पुरुषवक्त्राय नमः ओम होम अघोरहृदयाय नमः ओम ह्रीं वामदेवगुह्याय नमः ओम हम सत्योजातमूर्तये नमः ओम हम हृदयाय नमः ओम ह्रीं शिरसे नमः ओम हम शिखायै नमः ओम ह्रीं कवचाय नमः ओम हम नेत्रेभ्यो नमः ओम हस्ताय नमः ओम हम ईशानमूर्धाय नमः ओम ह्रीं तत्पुरुषवक्त्राय नमः ओम हम अघोरहृदयाय नमः ओम ह्रीं वामदेवगुह्याय नमः ओम हम सत्योजातमूर्तये नमः ओम हम हृदयाय नमः ओम ह्रीं शिरसे नमः ओम हम शिखायै नमः ओम ह्रीं कवचाय नमः ओम हम नेत्रेभ्यो नमः ओम हस्ताय नमः. The next is the Sankalpa. Now keeping the Akshita in your left palm and closing it with your right palm, keep both the hands on the right thigh. Chant the following mantras and drop the Akshita down in the knot at the end of the mantra. Om Mamopata Samasta Duridakshayadvara Bhagavat Shri Nityananda Paramashiva Prityartam Shri Nityanandeshwari Parashakti Sameta Shri Nityanandeshwara Paramashiva Prityartam Cha Shubhe Shobhane Muhurte Adhya Brahmanah Dvitiya Pararde Shri Shvetavaraha Kalpe वैवस्वतमन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे नित्ययुगे प्रथमे पादे जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भरतखण्डे मेरोः दक्षिणे पार्श्वे शकाब्दे अस्मिन् वर्धमाने व्यवहारिके प्रभवादीनां षष्ठ्याः संवत्सराणां मध्ये विकारिनाम संवत्सरे उत्तरायणे लक्ष्मीवेङ्कटेश्वर ऋतौ वृषभमासे शुक्लपक्षे चतुर्थ्यां शुभदितौ शुक्रवासरयुक्तायां पुष्यनक्षत्र ध्रुवयोग विष्टिकरण एवं गुणविशेषणविशिष्टायाम् अस्यां शुभदितौ श्री कैलासोन्नत द्वादशान्त श्यामलापीठारूढ़ श्री मीनाक्षी सुंदरेश्वर भिन्न स्वरूप परशिवपुत्र कुमार गुरुमन्यतुल्यावतार श्री पार्वती स्तन्यपान लब्ध दिव्य ज्ञान विश्रुत सकल निगमागम सारभूत द्राविड वेद प्रवक्त्रे श्रीमत्परम शिव करुणा समधिगत मुक्तामय चतुरश्चयान गीयमान चत्त चामर श्री चिन्ह गाहलादि समस्त बिरदावल्यलंकृत ज्ञान विज्ञान चक्रवर्ती सर्वजन संग सद्यो निर्वाण दीक्षा व्ययापवर्ग वर्ष विश्वान जीमूत परमत कलभ केसरी शैव सिद्धांत स्थापनाचार्य श्री राजाधिराज पांड्य महाराज गुरु शपन शाक्यादि महांधकार निवारण ज्ञान भानु वीक्षणानर्हार ध्वजोच्छेदन पूर्वक श्रीमद्वृषभध्वज स्थापक शैव समय कर्तृ सर्वज्ञ पीठारूढ़ श्री जगद्गुरु श्री ज्ञान संबंध देशिक स्वामी वागीश सुंदर माणिक्य वाचक स्वामिनां अवतार भूत श्री ज्ञान संबंध स्वामी पुनरुद्धत श्यामला पीठ महासंस्थान ज्ञान साम्राज्य शासक सर्वज्ञ पीठारूढ़ तृणवद्युक्तर दुषिततम गुरु महासन्निधान कैलाश परंपरागत सूर्यवंश सर्वज्ञ पीठ सुरांगी साम्राज्य शासक महानिर्वाणि पीठस्य अष्टोत्तर सहस्र श्री महामंडलेश्वर अटलपीठस्य अष्टोत्तर सहस्रतम अष्टोत्तर सहस्र श्री अटलपीठाधीश्वर धर्म मुक्ति स्वर्गपुर स्वर्णपीठस्य त्रयोविंश गुरु महासन्निधान श्रीमत्परमहंस परिव्राजकाचार्यवर्य सच्चिदानंद प्रणव स्वरूप चोत्र